तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यावज्जीयापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्ना विराजिता पदम्बुजः वेदान्तम्बुजसूर्यो यस्तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्य शाश्वता शान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीता तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढा तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्म सम्प्राप्ता कर्मबन्धविदायिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धुश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरुपादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरादिकं तत्त्वं न गुरोरादिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मानता श्रीजगन्नाथा मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु आदिरनादिश्च गुरु परमदेवतं गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। Guru Mata Pita Guru Bandhu Saka Guru Mata Pita Guru Bandhu Saka Guru Mata Pita Guru Bandhu Saka Tere charanon mein Swami mere koti pranam तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। यतम दो में ही परता तू में ही प्रियतम तू माई प्रणरा तू माई प्रियतम तू में ही परता तू में ही प्रियतम तू माई प्रणरा
charanon mein Swami, mere koti pranam. Tere charano me Swami, mere koti pranam. Tere charanon mein Swami, mere koti pranam. Guru Mata Pita, Guru Bandhu Saka. 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 Tere charanon mein Swami, mere koti pranam. 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 तुम्हें ही भक्ति हो, तुम्हें ही शक्ति हो. तुम्हारी भक्ति हो, तुम्हारी शक्ति हो. तुम्हें ही भक्ति हो, तुम्हें ही शक्ति हो. तुम्हारी भक्ति हो, तुम्हारी शक्ति हो. तुम्हें मुक्ति हो, मेरे सांब शिवा. तुम्हारी मुक्ति हो, मेरे सांब शिवा. तुम्हें मुक्ति हो, मेरे सांब शिवा. तुम्हारी मुक्ति हो, मेरे सांब शिवा. गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा. गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा. गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा. गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा. तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम. तेरे चरणों में स्वामी, मेरे कोटि प्रणाम. तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम. तेरे चरणों में स्वामी, मेरे कोटि प्रणाम. तुम्हें ही प्रेरणा, तुम्हें ही साधना. तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारी साधना. तुम्हें ही प्रेरणा, तुम्हें ही साधना. तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारी साधना. तुम्हें आराधना मेरे सांबा शिवा. तुम्हारी आराधना मेरे सांबा शिवा. तुम्हें आराधना मेरे सांबा शिवा. तुम्हें आराधना मेरे सांबा शिवा. गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा. गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा. गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा. गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा. तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम. तेरे चरणों में स्वामी, मेरे कोटि प्रणाम. तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम. तेरे चरणों में स्वामी, मेरे कोटि प्रणाम. तुम्हें ही भक्ति हो, तुम्हें ही करुणा हो. तुम्हारी भक्ति हो, तुम्हारी शक्ति हो. तुम्हें ही प्रेम हो, तुम्हें ही करुणा हो. तुम्हारी प्रेम हो, तुम्हारी करुणा हो. तुम्हें मोक्ष हो मेरे सांबा शिवा. तुम्हारी मोक्ष हो, मेरे सांबा शिवा. तुम्हें मोक्ष हो मेरे सांबा शिवा. तुम्हें मोक्ष हो, मेरे सांबा शिवा. गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा. गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा. गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा. गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा. तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम. तेरे चरणों में स्वामी, मेरे कोटि प्रणाम. तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम. तेरे चरणों में स्वामी, मेरे कोटि प्रणाम. गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा. गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा. गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा. गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा. तेरे चरणों में स्वामी
कोटि प्रणमो मेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। शिष्याय नमः। ओम विषमाय नमः। ओम देवकार्य समुदयताय नमः। ओम सूक्ष्मतनवे नमः। ओम चिन्मयाय नमः। ओम गुरुमूर्तये नमः। ओम सुंदराय नमः। ओम सुलोचनाय नमः। ओम सुमुखाय नमः। ओम षड्वासाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम पद्मभुजाय नमः। ओम मंदगमनाय नमः। ओम चर्मवरदलिने नमः। ओम रामाय नमः। ओम मंदिरस्थपकाय नमः। ओम श्रीदिववर्चकाय नमः। ओम गैर्यज्ञने नमः। ओम अर्पणस्वीकारकाय नमः। ओम विष्णुपूजकाय नमः। ओम नमो नारायणेति मंत्रपसकाय नमः। ओम स्वरमयाय नमः। ओम मधुरकंठाय नमः। ओम कृष्णसंकीर्तनलोपाय नमः। ओम स्तोत्रप्रियाय नमः। ओम मितवर्षिणे नमः। ओम वाग्मिने नमः। ओम चित्रकलाशारदाय नमः। ओम वरदराय नमः। ओम सदवे नमः। ओम जगत्पन्थाय नमः। ओम सर्वलोकैकाय नमः। ओम भक्तप्रियाय नमः। ओम सुहृदाय नमः। ओम अनुकूलाय नमः। ओम नेयाय नमः। ओम सुदर्शनाय नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम प्रेममूर्तये नमः। ओम शुभेक्षणाय नमः। ओम प्रीतिवर्धनाय नमः। ओम स्वस्तिदायकाय नमः। ओम तारकाय नमः। ओम अनुग्रहाय नमः। ओम वर्धनाय नमः। ओम अर्चिताय नमः। ओम अर्थाय नमः। ओम सिद्धिप्रदाय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम मनोहराय नमः। ओम मोक्षाय नमः। ओम सिद्धेश्वराय नमः। ओम भस्मभूषिताय नमः। ओम आत्मलिंगाय नमः। ओम लिंगचन प्रोत्साहकाय नमः। ओम सिद्धिसदनाय नमः। ओम मधवाय नमः। ओम ओंकारोपासकाय नमः। ओम सूक्ष्माय नमः। ओम विशोकाय नमः। ओम सात्विकाय नमः। ओम समदर्शिने नमः। ओम दक्षाय नमः। ओम अचिन्त्याय नमः। ओम निरंकाराय नमः। ओम निर्मोहाय नमः। ओम अव्यग्राय नमः। ओम चित्तक्रोधाय नमः। ओम विनाशीलाय नमः। ओम स्ववशाय नमः। ओम कुशलाय नमः। ओम क्षमाय नमः। ओम सत्यधर्माय नमः। ओम निर्विकल्पाय नमः। ओम विरक्ताय नमः। ओम अतीन्द्राय नमः। ओम सत्यसंधाय नमः। ओम पवित्राय नमः। ओम मधुरस्वभावाय नमः। ओम सुरनंदाय नमः। ओम नंदनाय नमः। ओम प्रसात्मने नमः। ओम भक्तनिधये नमः। ओम सक्षये नमः। ओम समात्मये नमः। ओम सदयोगिने नमः। ओम हरये नमः। ओम सुतपाय नमः। ओम सम्याय नमः। ओम गुह्याय नमः। ओम विमुक्तात्माय नमः। ओम गभीराय नमः। ओम गुप्ताय नमः। ओम अत्मरमाय नमः। ओम श्रीनिवासाय नमः। ओम देवाय नमः। ओम द्युतिधराय नमः। ओम धन्याय नमः। ओम गुरवे नमः। ओम दुरतिक्रमाय नमः। ओम गहनाय नमः। ओम भगवते नमः। ओम हरिशरणमार्गदर्शकाय नमः। ओम गुरस्थ जगत्काय नमः। ओम अभिप्रायाय नमः। ओम सर्वमतसमध्याय नमः। ओम शमैकटभावरकाय नमः। ओम प्रेमावतार श्री विश्वानंद स्वामिने नमः। तो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे द्विदिव्य सप्तधामपि इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदं सामोदमस्य भागुं सुरे प्रेणी पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धार्येणे
Vishnu karmani pashyata yato vritani paspase Indrasya yujasakha Tat Vishnu paramam padagum sada pashyanti suya Diviva chakshuratatam Tat vipraso vipanyavo jagruvagum sasamindate Vishnuryat paramam padam. Gurudevaya dhimai Tanno Vishwananda prachodayat Om Premavataya vidmahe Satgurudevaya dhimai Tanno Vishwananda prachodayat Om Premavataya vidmahe Satgurudevaya dhimai Tanno Vishwananda prachodayat Rakrunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nivigdam Kuru Me Deva Sarva Karyeshu Sarvada Sarva Karyeshu Sarvada Om Bhurabhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat Om Bhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. Shri Krishna Vishnu Madhusudana Nakhetabare Narayana Shrutati Vikrama Chakrapane Daityadi Sajjadara Shridhara Vasudeva Gopala Krishna Haraye Tava Suprabhatam Shri Rukminisha Bhavanasha Hare Murare Radesha Gopisha Surupa Brahmani Vandya Shri Balakashaya Vaikuntapate Bhuvanaikamurte Gopala Deva Haraye Tava Suprabhatam Meena Krite Kamatarupa Varaha Murte Devi Kramaya Guhane Prarama Rama Shri Rama Krishna Yadunandana Kalkirupa Gopala Krishna Haraye Tava Suprabhatam Govinda Madhava Mukunda Parakparesha Damodaram Jatarananda Kadari Shuri Gopa Gopi Jana Samrita Dina Bando Gopi Jana Priya Hare Tava Suprabhatam Shriram Dishayin Bhujagadi Patalpashayin Shanpakta Hritsa Sadashayin Ramangashayin Shri Gopa Bama Mridutalpa Sukadishayin Gopa Vallabha Hare Tava Suprabhatam Shri Kashyapati Sukanarata Gautamadi Brahmarshi Sangamani Sangava Bharatesho
तिष्ठन्ति देव तव दर्शन भाग्य हेतो गोपालशेखर हरे तव सुप्रभातम् मन्दार चादि तुलसी दलमालिकाद्य हे माल्यानि अञ्जलि बुधे समुदाहरन्ति तिष्ठन्ति त्वत्प्रवतधारतले मुनीन्द्रः राधा मनोहर हरे तव सुप्रभातम् वेदत्रयं पठति गौतमकानगुह्यः गायन्ति सद्गुणगणो वरदाशवर्गः संकीर्तयन्ति तव नाम कदा विशेषः श्रीनारदादिऋषया तव सुप्रभातम् गोवर्धनोदरन गोपकिशोर गोपा गोपीजनामृत सुवेश भवादिपोता त्रैलोक्यमोहन सुमङ्गल दिव्य देहा श्रीरुक्मिणीश वरदा तव सुप्रभातम् श्रीवत्स क्षीण शरणागत पारिजाता भक्तर्थिभञ्जन कृपाकर दीनबन्धो दिव्यन्त गायति जनप्रिय दिव्य रूपा श्रीनन्द गोपतनया तव सुप्रभातम् पद्मक्ष पद्ममुख पद्मदला प्रणेया पद्मालय शरण पद्मनिवास शौरी पद्मावती सुरसेवित पाद पद्मा पद्मादिनाथ हरये तव सुप्रभातम् वृन्दातले विहरणाय महेन्द्रवन्द्य कन्दर्पदर्पहरदीन्य सुदेशरूपा चन्द्राननाय शिरचन्दनलिप्तदेहा गोविन्द यादव हरे तव सुप्रभातम् श्रीनन्दनन्दन यशोरकुमार धीरा मायङ्गदीनद विचोन सुपुष्पहार नीलम्बुदासु शरीर रमा विहार गोपाल देव हरये तव सुप्रभातम् श्रीवैश्री चन्द्रवति सत्य सुगन्धि भद्रा श्रीनिद्रविन्द दिवसा प्रभु पुत्रिका जये तिष्ठन्ति दिव्य भवमे तव सेवनानम् गोपी मना प्रिय हरे तव सुप्रभातम् श्रीकृष्ण अच्युतानन्द मुकुन्द शौरी राधा मनोहर जनार्दन चक्रपाणे नामानि दिव्य मुनयो न निशम्बरन्ति रामे मुहूर्त समये तव सुप्रभातम् श्रीकृष्ण सुप्रभातम् ये पातन्ति यः निशम् भूरि कृतं महापापम् श्रीकृष्ण ग्रहीतु ईश्वर परम कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराहिर गोविंद सर्वघटनाकरण गोविन्दमादि पुरुषोत्तमं भजामि गोविन्दमादि पुरुषोत्तमं भजामि चिन्तामणि प्रकर सत्मशुकल्पवीक्ष लक्षावृतेषु सुरभियभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुं क्वरन्तमरविन्ददलायताक्षम् भागवतं समसितं सुधसुन्दरङ्गम्
कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नं गदं प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामं त्रिमङ्गलरितं नियताप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पन्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्तस्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगाम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानम् स्योऽप्यस्ति यत्र पदसिन्यविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एत्योप्यसौरचयितुं जगदन्तकोटिम् यच्छक्तिरस्ति जगदन्तचयायदन्तः अन्धन्तरस्तपरमानुचयन्तरस्तम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पावपावितधियो मनुजस्तदेव सम्प्राप्य रूपमहिमा सनयानभूषः श्रुतेयमेव निगमं प्रतिते स्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिपाविताभिस्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत् किलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जलाचुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमापुमन्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदन्तकोटि ज्योतिष्वशेषवसुधादिविभूतिदीनम् तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि माया यस्य जगदन्तशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेन वितायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वविशूद्यसर्वम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसत्मतया मनस्सु यत्राहिनं प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि
पुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि निजधाम्नितले च तस्य देवी महेश हरिनामश्रुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिशया गिरिजश्चयेन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका चायेव यस्य भुवनानि विपर्ति दुर्गा इच्छानरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रियं यथा तद्विकारविशेषयोग सञ्जायते नहि तथा पृथक्स्ति हेतोः यशम्भुतमपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपाक्षिरेव ईदृशं तरमाभ्युपेत्य दीपायते विविधहेतु समानधर्म यस्तद्विगेव इच विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यः कारणानवचले भजति स्म योग निद्रं अनन्तजगदण्डस्वरूपकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परं समूर्तिम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति ओमपि न च जगदन्तनाथः विष्णुर्महंसैर्यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अस्मन्यथाश्मशकलेषु निजेषु देशः क्षीयन्ति यत्प्रकटयत्यपि तत्त्वाग्रा ब्रह्माय एष जगदन्तविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भं द्वन्द्वे प्रणामसमये सगणाधिराजः विघ्नं विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आदिर्मयि गगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्ततात्ममनसीति जगत्त्रयाणि यस्मद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यक्षुरे च सविता सकलाग्रहाणं राजः समस्तसुरमूर्तिरशेषदेशः यस्यज्ञयप्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि कर्मोत्थपापनिचयश्रुतयस्तपंसि रामादिगीतपथगावदयश्च जीवः यद्दत्तमाप्तविभवा प्रकटा प्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्त्विन्द्रगोपमतविन्द्रमहो स्वकर्म कन्दानरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहज प्रणयाति भीति वत्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावहे सञ्चित्य तस्य सदृशिं तनुमा पुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं
bhajami, Govindamadipurusham tamaham bhajami. Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karana Govindamadipurusham tamaham bhajami, Govindamadipurusham tamaham bhajami. Om Ajnanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Jai Gurudev. So today I chose from the Bhagavatam, Canto 9, Chapter 11, Verse 6. So it goes like that. Apratam nastva yakimnu Bhagavan Bhuvaneshwara Yannonta Hridayam Visha Tamo Amsisvarochisa. It says, O Lord, you are the master of the entire universe. What have you not given to us? You have offered the core of our arts and dissipated the darkness of our ignorance by your effulgence. This is the supreme gift. We don't need a material donation. So, in this specific verse, Sukadev is symbolically talking to Rama. He's not talking directly, but he's referring to him as Supreme Lord. And, you know, Rama, which was, of course, an avatar of Vishnu, came down and, you know, to give example to show humanity. And it says here that, first of all, of course, master of the entire universe. And he makes this question, what have you not given to us? So, actually, it is true, right? Like, if we think about it, in a sense, he has given to us everything. And in another sense, do we actually believe that he has given to us everything? Because if that was the case, that he has given to us everything and we would believe into that, then we would not complain. You know, there would not be reason to complain about life, problems, anything, because we would understand that everything comes for a reason and we don't need more than what we have, because this is what he has given us to actually reach that destination, which is where we want to go. We want to go to him. So in the sense, if we acknowledge, or if our goal is that we want to reach that destination, the house of God, basically, then it will be easier to believe that he has given to us everything. Because what we want is not material donation, as he says in the last part of the verse, but that's not where we want to focus our mind, but we want something else, something that actually is beyond this material creation. And so, as we are not interested so much into this, then life will become easier to accept. But of course, if that is not the case, if actually the purpose, or your purpose is something else, then life will seem very unjust. And you will strive for material success, and you will try and you will put your effort, and in some cases it will work because you will get what you want. And you have many cases in the world where people come from very difficult situation, poor situation, poverty, and so on, and yet
because they put the effort, because they have clear, in their mind what is their goal, and so they achieve it. So, but they have the goal in their mind, and they don't give up. And then we talk about spiritual people, and where I guess our goal is not to have a big house or to have a Ferrari. We want to simply understand, feel, realize the truth of this existence. And we all have figured out, I think, that only way is not for sure how our life was before, not for sure by having success in this world, in this material world. We have figured out that the way, it is a deeper way. It is a transformation process. It is through the grace. It's through, devotion to God. And in the verse it says, what have you not given to us? In that sense, I theoretically believe that, yes, God has given me everything so that I actually can realize Him. Now, point is, will I actually use everything that He has given me for that cause? That's another question. How much do I want to realize Him? Sometimes, also in a spiritual sense, we demand, not just in a material sense, but also in a spiritual sense, we demand more than what we have. Meaning, your spiritual awareness is a certain kind, and you would like to have more of that. You would like more closeness to the Master. You would like more spiritual experiences, more devotion, more that, and so on. And yet, I personally believe that means I didn't understand, and I'm not grateful enough for what actually I have right now. Because if I want something more, that means, first of all, I'm not grateful enough for what I have. Probably I didn't appreciate what I have. It comes to my mind the example of Kriya, for example. Guruji throughout the years, he has given, first Kriya, second Kriya, third Kriya, right? So you start your journey, and with Kriya, and you practice Kriya, and you are practicing, right? You have to practice a certain amount of years to get Kriya second, and then a certain amount of years of second Kriya to get third Kriya. So you start Kriya, first Kriya, and somehow in the mind comes the idea, the very attractive idea, let me practice so that later I can get second Kriya. But if you would have really appreciated and dive into first Kriya, probably we will not want more. Who knows, right? I can say that I'm practicing Kriya and I understood it. I feel always like a kid when I'm practicing, like always is the first time. And then it continues to say that you have entered the court of our arts and dissipated the darkness of our ignorance by your effulgence. So this is, and he says, this is the supreme gift. So for me, this was very important to understand, because it doesn't say to be in my presence is a supreme gift, or to realize me is a supreme gift, or to serve me is a supreme gift. No, it says, you entered the core of our hearts and dissipated the darkness of our ignorance. So we all actually are here, right? Like our heart, the darkness that lies, the ignorance that lies in ourselves, it has been dissipated in a sense that we know theoretically what is the truth. And we are lucky enough that we believe into that.
And that is the supreme gift, because as Guruji's entered our life, all our life changed, and we know now what is the reality of things. And as I always believe, for me, I don't need to have the experience that is true, right? I have enough experience to trust Guruji. And everything that he says come along with that. If I trust him, that of course what he will say, it's also going to be true. And for me to have this understanding of life, it's actually one of the most important things that I'm grateful, let's say, to him that he has given me. Through his teachings, I found his teachings so precious because, among so many billions of people into this world, really, how many know him? How many have seen him, right? How many actually have the chance to talk to him? How many have started this path with him? So the number is always decreasing, right? How many have surrendered to him? Who knows? Even less. So in that sense, we are so lucky that we got to know the truth. And you nowadays, to find truth in the world is quite difficult because everybody will say something different about the same topic. It's just funny how it works. You have so many opinions about everything. And in spirituality is the same. You have so many opinions of so many people. So many masters or called masters that they tell you that this is the truth and that is not the truth. Yet, who knows if what they're talking is right? And in that sense, when I met Guruji, for me it was clear. Yes, he knows. Like there was no doubt. He knows because he knows me. And when I realized that he knows me, then I understood, well, never found anyone in this world that actually knows me, know what I'm feeling, or knows how to treat my disease or my problems or my insecurity or my everything around. But he did in the first place, and I understood, well, when I will ever found someone like this, will I? I think no. And then I took the chance. I said, you know what, if you lose it, if you miss the chance now, if you just go, because there was a chance to go, then you maybe will enjoy a bit of life, but you will never find someone that truly cares about you. And that Lord, which Sukadeva is talking here, Rama, let's not forget that even though he has given to us everything, and so we are in eternal debt towards him, is so humble that even if we go away from him, even if we leave him, same story with Guruji, of course, he will not have any problems with that. It's not that he will actually stop loving you. No, he will still love you. Whenever times comes, he will accept you again. There is this nice story when Rama was after the exile, after Ravana was defeated, and they go back to the kingdom. He was going through the city of Ayodhya, and he wanted to know what people think about him. So he was passing by, and at one point there was a man that was talking to his woman, and because he discovered that his woman basically cheated on him. And so the man said to her, I will not take you back, you that cheated on me. I'm not like Rama that took Sita back, even though she cheated, right? That was the opinion. So in that sense, when he heard that,
for the sake of the kingdom, for the sake of the people, because the rumors, the gossip, how fast that spread, he abandoned Sita. So Sita then went to the forest, and she was pregnant even, right? She went to Valmiki ashram. So for the sake of the people, he was that humble, that surrender, that for him to leave his wife, her dearest companion, he did it. So he has given to us everything, and yet is not asking us anything in return. And he doesn't want us. He's not forcing us to have a good opinion about him. Yeah. Jai Gurudev. Sharanam Prapade
Bhutabhrteshwarnath Madim Sharanam Prapade Avakara Kamalavare Makam Aduta Shringa Narika Hiranyakashipu Anubringa Rishavaditha Shringa Lalita Hiranyakashipu Anubringa Keshavadeva Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Keshavadeta Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Narsingade, Jayo Narsingade, Jayo Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Bhakta Sarupa Jayo Prahlad Maharaj. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Vishwananda Gurudev, 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 Vishwananda Gurudev. Gurudev, Sri Vishwananda Gurudev, Satgurudev Maharaj Ki Jai. Sab mila bolo Om Namah Shivaya. Bolo bolo 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 sab mila bolo Om Namah Shivaya. 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 Om Namah
Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Bolo bolo sab mila bolo, Om Namah Shivaya, Bolo bolo sab mila bolo, Om Namah Shivaya. bolo bolo sab mila bolo, Om Namah Shivaya, Bolo bolo sab mila bolo, Om Namah Shivaya. Chuta chata me Ganga dan, Chuta chata me Ganga dan. Bolo bolo sab mila bolo, Om Namah Shivaya, Bolo bolo sab mila bolo, Om Namah Shivaya. bolo bolo sab mila bolo, Om Namah Shivaya, Bolo bolo sab mila bolo, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. bolo bolo sab mila bolo, Om Namah Shivaya, Bolo bolo sab mila bolo, Om Namah Shivaya. bolo bolo sab mila bolo, Om Namah Shivaya, Bolo bolo sab mila bolo, Om Namah Shivaya. bolo bolo sab mila bolo, Om Namah Shivaya, Bolo bolo sab mila bolo, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. bolo bolo sab mila bolo, Om Namah Shivaya, Bolo bolo sab mila bolo, Om Namah Shivaya. bolo bolo sab mila bolo, Om Namah Shivaya, Bolo bolo sab mila bolo, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. bolo bolo sab mila bolo, Om Namah Shivaya, Bolo bolo sab mila bolo, Om Namah Shivaya. bolo bolo sab mila bolo, Om Namah Shivaya, Bolo bolo sab mila bolo, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. bolo bolo sab mila bolo, Om Namah Shivaya, Bolo bolo sab mila bolo, Om Namah Shivaya. bolo bolo sab mila bolo, Om Namah Shivaya, Bolo bolo sab mila bolo, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. bolo bolo sab mila bolo, Om Namah Shivaya, Bolo bolo sab mila
Shivaya. Om Namah 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 Shivaya. Bolo bolo sat mila bolo. Om Namah Shivaya. Har Har Mahadev. Ramanuja Ramanuja Mangala Mangala me Raja Ramanuja Mangala Mangala me Ramanuja Ramanuja Mangala Mangala me. Jadi Raja Ramanuja Mangala Mangala me. Yatindraya Karunakaraya Mangala Mangala me Yatindraya Karunakaraya Mangala Mangala me. Prabhati Dame Garataya Mangala Mangala me Prapati Dharme Garataya Mangala Mangala me. Ramanuja Ramanuja Mangala Mangala me Yadira Raja Ramanuja Mangala Mangala me Ramanuja Ramanuja Mangala Mangala me. Yatiraja Ramanuja Mangala Mangala me. Shaligrama Pradistitaya Mangala Mangala me Saligama Pradishtitaya Mangala Mangala me. Tridandararine Gota Gajaya Mangala Mangala me Tridandadarine Godakajaya Mangala Mangala me. Ramanuja Ramanuja Mangala Mangala me Jadira Raja Ramanuja Mangala Mangala me Ramanuja Ramanuja Mangala Mangala me. Yatiraja Ramanuja Mangala Mangala me. Gangesha Kinkararataya Mangala Mangala me Rangesha Kinkayarataya Mangala Mangala me. Mananataya Dharine Dharaya Mangala Mangala me Mananataya Dharine Dharaya Mangala Mangala me. Ramanuja Ramanuja Mangala Mangala me Radhira Raja Ramanuja Mangala Mangala me Ramanuja Ramanuja Mangala Mangala me. Yatiraja Ramanuja Mangala Mangala me. Mangala Mangala me. Mangala Mangala me. Om Jai Jagadish Hare Swami Jai Jagadish Hare Bhakta Jano ke Sangata Dasha Jano ke Sangata Jana me dura kare. Om Jai Jagadish Hare. Yoga ve palapave Dukha bina se manaka. Swami Dukha bina se manaka. Sukha Sampati Garave Sukha Sampati Garave Dastani Dedanaka. Om Jai Jagadish Hare.
पिता तुम मेरे, शरण गहु मैं किसकी, स्वामी शरण गहु मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, तुम बिना और न दूजा, आशा करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किसा विधि विनोदयामय, किसा विधि विनोदमामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीनबंधु दुःखहर्ता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, करुणा हाथ बधाओ, करुणा हाथ बधाओ, शरण पदा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पापारो देवा, स्वामी पापारो देवा, श्रद्धा भक्ति बताओ, श्रद्धा प्रेम बताओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सफाई तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, पांच जनों के संकट, दस जनों के संकट, जन्म दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, मन चाकर राखो जी, गिराई लाला चाकर राखो जी, गिराई लाला चाकर राखो जी, गिराई लाला चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, गिराई लाला चाकर राखो जी, गिराई लाला चाकर राखो जी, गिराई लाला चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, माने चाकर राखो जी, गिराई लाला चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी, गिराई लाला चाकर राखो जी, गोविंद माने चाकर राखो जी, गिराई लाला चाकर राखो जी, गिराई लाला चाकर राखो जी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव मातुश्च त्वमेव, त्वमेव विद्याधनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गोविन्द असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु,
Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Prem se bolo Lakshmi Narayan Bhagavan ki. Prem se bolo Bhutabhrteshwarnath Narasimha Bhagavan ki. Prem se bolo Shri Radha Krishna Kanhaiya ki. Prem se bolo Madhar Kriya Babaji ki. Prem se bolo Shri Ramnucharya ki. Prem se bolo Shri Satgurudeva Shri Swami Shwananda Mahaprabhu ki. Krishnaya Govindaya Gopichan Vallabhaya Paraya Paramapurushaya